everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So, as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Monday से Thursday 11 बजे सुबह में the Hindu analysis होता है. Today is 19th June, and we are here with the Hindu analysis of 19th June. That is Monday. आज 19 जून Monday है, and we are here. So let's discuss. अगर मेरी आवाज आ रही है, just write in the comments, yes sir, you're audible. Okay, so there is an article on the first page. Biren asks Mizoram CM to protect Meethi's MLAs in New Delhi to meet Prime Minister. So this article we will be discussing about it. I hope you are aware regarding the Manipur violence and all. So this news is about that. The next one is here is an article about it. Indian drugs under lens in Sri Lanka over adverse events. So these two articles we will be discussing in detail. ये दोनों important article है, तो आज हम लोग इस दोनों के बारे में जानेंगे. So let's start with this one. That is Biren asked Mizoram CM to protect Meethi's MLAs in New Delhi to meet Prime Minister. First before explaining this, there's a question for you. First answer this question, then I will be explaining it. Who is the Chief Minister of Mizoram? Your options are Mr. Zoram Thanga, Mr. N. Biren Singh, Mr. Hemant Biswa Sarma, Mr. Conrad Sangma. What is the right answer to this question? पहले इस सवाल का आंसर कीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. Because the Chief Minister of Mizoram is in the news on the first page article. That is why I'm asking this question. आंसर बताइए क्या सही जवाब है. देखो, I hope you all are aware of it. Please be careful. I'm asking the Chief Minister of Mizoram. मैं मिजोरम की सीएम का नाम पूछ रहा हूँ. Okay. Yes. Namra Aftab is right. Manu Punia, you all are right. I think only 2% has answered it correctly. So मैंने मिजोरम की चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा है. So the right answer is Mr. Zoram Thanga is the right answer. And Biren Singh is the chief minister of Manipur. Okay. Mr. Hemant Biswa Sarma is the chief minister of Assam. Okay. And Conrad Sangma is actually Mr. Conrad Sangma is the chief minister of Meghalaya. This you should be knowing it. So the chief minister of Mizoram is Mr. Zoram Thanga. A is the right answer to this question. Okay. So 1 is the right answer. अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं. Biren ask. Biren मतलब N. Biren Singh. So Manipur chief minister has requested. Manipur chief minister has requested Mizoram CM. Who is the Mizoram CM? Mr. Zoram Thanga. To protect Meethi's MLAs in New Delhi to meet Prime Minister. Okay. Now I hope you are aware. देखो actually क्या है. Here is the northeastern state of India. So this is actually the northeastern portion of India. Here is Bangladesh. I hope you are aware. Here is Bhutan. These are northeastern states. So here is Manipur. This is the state of Manipur. I hope you are aware in recent days we have seen the clashes between Kuki and Meethi community. I hope you are aware of that. So these things were in the news. Now, इसके बगल में this state is actually the state of Mizoram. This is the state of Mizoram. इसमें लिख देते हैं मणिपुर यहाँ पे लिखा हुआ already. Okay. So now what happened is when the violence actually started and also some people actually moved from here to here, of course, to protect themselves. So that is why the Manipur chief minister have requested that Mizoram CM should take care of those, Meethis who have gone from Manipur to Mizoram. So that is why you should be knowing it. आपकी आवाज कम आ रही है. Is it so guys? मेरी आवाज कम है. Is voice too low guys? I think it's fine. Please refresh from your side. Is it so? Okay. Now let's talk. That is what is being discussed here. Okay, fine. Now मेरे ख्याल से आवाज ठीक आ रही होगी, I guess, because other people have not complained. Now that is what is being talked. Mizoram has population of both Meethis and Kukis and now has also given refugee to 10,000 displaced Kukis from Manipur. Zoram Thanga says people of Mizoram are empathetic towards Meethis. Okay, so empathetic मतलब वही comes from the word empathy. So it is one step ahead of sympathy. ठीक है, sympathy होता है ना हमदर्दी. So empathy is even one step ahead of sympathy. So the Mizoram chief minister have said that yes, actually
वी आर सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मीटीज कम्युनिटी एज वेल. ठीक है, सो आप देख सकते हो मणिपुर चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन बीरेन सिंह कॉल्ड मिजोरम सीएम asking him to take measures to ensure security of Methi community and all. Okay, so that is what you should be knowing it. Okay, yes. Okay, so he is Mr. Zoram Thanga, the chief minister of Mizoram, and he is Mr. N Biren Singh, the chief minister of Manipur. That is what you should be knowing it. ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यूज में इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम डिस्कस कर लिया. Okay, yes, we have discussed it. Manipur is here. Here is Manipur and here is Mizoram. Now let's move on to the next article on the first page, talking about Indian drugs under lens in Sri Lanka over adverse events. So first of all, I hope you all are aware that drugs here means medicine, dawai. Adverse events means something bad has happened. Drugs मतलब यहाँ medicine हो गया. Adverse event means something bad incident or wrong incident have happened. So these are in the news. Actually क्या है देखो, 2 patients died after being given Indian made anesthetic drugs. Indian made eye medication caused visual impairment to 10 patients. Okay, so that is why it was in the news. देखो actually एक medicine है, देखो that is called as Bipu vaccine, Bipu vaccine. I don't know the pronunciation. It is an anesthetic drug. You understand anesthetic? हिंदी में हम लोग कहते हैं बेहोश करने के लिए दवा दिया जाता है. जैसे कुछ ऑपरेशन किया जाता है तो पहले बेहोश किया जाता है, तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है. So anesthesia is actually given to the patient to make him or her unconscious so that operation can be done without, giving pain to that person. ठीक है, उसको हम लोग anesthesia कहते हैं. Okay, so this is an anesthetic drug. So 2 persons died while giving this anesthetic medicine. Drug here means medicine. That is what is the name, Bipu vaccine. Then एक और जो न्यूज इंसिडेंट्स आया है, what they are saying is कि visual impairment means eyesight gone, आँख की रोशनी चली गई, eyesight gone. Among 10 patients who are administered Indian medicines after eye surgery. तो आई के सर्जरी के बाद ये वाली दवा इंडिया की कोई मेडिसिन दी गई और इससे उनकी आँख की रोशनी चली गई. That is what they have said. Okay, तो अब इस पर मतलब this is a subject of investigation and all. So just have an idea, बस एक आपको basic idea होना चाहिए कि Bipu vaccine is in the news and all. Just have an idea about that. Okay, इसको पढ़ लेना कि which are the companies which and all. तो yeah, just have an idea. Now before moving on, guys, there's a small announcement. Download our app. Go to Play Store. Take a download BYJU'S exam prep app. Go to CLAT section. Now today at 6 p.m. I will be coming you with this session. इसमें क्या होगा? This will be a sort of a quiz. I will be conducting a quiz where I will be asking the old questions. जैसे क्या होता है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, revision of the Hindu questions. So when I do the Hindu analysis, I give you a lot of questions. ठीक है, and after 1 or 2 months you forget a lot. ठीक है, तो इसीलिए मैं पीछे से रिवाइज करा रहा हूँ from March, April and all. I am revising the previous contents. Okay, so that would be beneficial for you only. ठीक है, so please do watch it at 6 p.m. 6 p.m. पे app पर, on our app. So download the app, go to CLAT section, and this will be having a free session. Please do join it. ठीक है, yes, याद रखिएगा. Now we are running this 3-day free trial also on our app. Go there, and the link is given in the description from where you can register for this 3-day free trial of our paid courses. So this is the paid course. The hardly 5-6 months is left. You must go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests is there. Monthly magazines are also being provided. So if you have any question regarding paid course, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. Okay? Okay. Now, yes. हाँ, part 6 नहीं हो पाया. Actually, I was on leave, तो कोई बात नहीं. अब इसी को part 6 मान लो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नंबर से. Nothing to worry. Okay. Now let's start with this one. The editorials I have told you. So these are the 4 editorials. Okay, let's start with this one. But before that, there's a question for you. पहले आप ये question बताओ. International Yoga Day is celebrated on dash. Your options are 19th June, 18th June, 21st June, 14th July. International Yoga Day कब मनाया जाता है? देखो, this is at international level, means United Nations have declared it. UN General Assembly have passed resolution to celebrate international level. It is not only national level but at the world level. ठीक है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? Is celebrated on and why also?
Please tell me the reason. Yes, very good. Many people are answering it. Gauri, Akshar, Priya Chavan, Sani Ansari, Namra Aftab, Gopal, Zoya Khan, Nitika. Yes. 21st June is celebrated as International Yoga Day. तो अभी 2-3 दिन आज 19 है ना, so 2 दिन बाद we'll be seeing this again, International Yoga Day. तो आपको ये बताना है कि why do we celebrate. मैंने पहले कभी बताया भी है. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, लाइक एवरीवन. यस, सबको aimed at promoting awareness of editorial yoga. Yes, Gauri, that you are correct. I agree that it is for promoting yoga. लेकिन क्यों ये डेट क्यों चुना गया, ये मैं पूछ रहा हूँ. Why this date has been chosen? ये मेरा क्वेश्चन. This date has been chosen. Why? क्यों? This date is slightly special from geography point of view. अगर किसी ने geography पढ़ा है तो उसको पता होगा क्यों 21 जून geography में फेमस होता है. Okay, let me tell you. देखो, this is actually the earth. तो ये है इक्वेटर, ठीक है. दिस इज इक्वेटर. तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, यू मस्ट हैव बीन टॉट इन स्कूल डेज एंड ऑल. सो वी आर हियर, है ना, हम लोग मतलब इंडिया यहीं पे है ना. सो हियर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी लाई. सो बेसिकली 21st June is famous. Yes, Gauri has answered it. Rita Solanki, yes, very good. 21st June is longest day in northern hemisphere. Very good. In northern hemisphere. ठीक है. 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन है, ठीक है. यस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज स्लाइटली स्पेशल फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए मैंने कहा भी था कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो यू मस्ट बी नोइंग इट. और इंटरनेशनल योगा डे ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कम्स इन द न्यूज अगेन एंड अगेन, सो यू शुड बी नोइंग इट. यस, रश्मिकांत ओझा, गोपाल गोयल, धनंजय, यू ऑल राइट. नाउ देखो, एक आर्टिकल अबाउट इंडियन शुड बी सेइंग टू द यूएस ऑन 21st June. अब देखो 21st June वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल योगा डे, ये पता होना चाहिए. देखो, दिस आर्टिकल इज एक्चुअली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. दे हैव क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. तो आपको अगर पढ़ना है तो यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन रीड इट. बट कुछ फैक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ से बस दिखा देना, ठीक है. अदरवाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट. So India in April this year, India surpassed China as the world's most populous nation, है ना. ये तो आपको पता होगा शायद. That in I mean 1 or 2 months back it was very much in the news that we defeated China to become the most populous country and all, ठीक है. तो जैसे यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे लिखा है, इतना नंबर, यानी आप समझ दो अराउंड 142 करोड़ पीपल इन इंडिया, ठीक है. ओके, और यू कैन से 1.42 बिलियन, ठीक है. सो इफ यू आर राइट इन बिलियन, इट इज 1.42 बिलियन population, or 142 crore population is there in India. So I mean that is what they are talking about. तो इसी की उन्होंने बात की है. Then the author is talking about by 2030 the ratio of India's working age population to its total population will reach 70%, which is the highest of any large economy. देखो, यूथ पॉपुलेशन जो है ना, परसेंटेज नहीं याद रखना, बट यूथ पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी हाई, है ना. यंग लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है. So if we are actually using it properly, I mean this providing a skill, education and all, so then it would actually leads to greater employment, then it will lead to greater GDP growth and all, ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड. So demographic dividend means youth population is very high in a country, so we call it as demographic dividend. And if it is used properly, I mean used properly in the sense कि if it is I mean education is given, skill is given, then of course it will lead to huge increase in GDP and all, ठीक है. सेंसस नहीं हुआ रीता सोलंकी. सेंसस तो ओल्ड वाला है, 2011 वाला, उसके हिसाब से I mean पॉपुलेशन आई थिंक 121 करोड़ के आसपास है ना. तो अभी तो ये पुराने आना, अभी सेंसस नहीं हुआ, बट यूनाइटेड नेशन की कैलकुलेशन के हिसाब से दे कॉल इट एज 142 करोड़ है ना. मतलब अंदाजा लगाएंगे, कुछ उनका एस्टिमेट होगा. Okay, now so the author is now going in history and all that. They are talking about the India along with China as the powerhouse. तो यहाँ पर that in the past, है ना, before the arrival of British. So before British came to India, India along with China was the powerhouse. Powerhouse मतलब कि a lot of means industries were there and all, है ना. So it used to drive the economy. तो उसी को powerhouse define कर रहे हैं. So that is what they are talking about. Then they are talking about a lot of craftsmen like Pietradora artistry. You will find this type of design in Taj Mahal. ठीक है, इस डिजाइन होता है, मतलब डिजाइन कैलीग्राफिक डिजाइन कहते हैं,
पत्थर के तराशने को. So that's Petra Dora designing is there. So these are the things they are talking about. Okay, so then colonialism eroded most of the tradition that made India great. So colonialism means, of course, the British, the rule of British, है ना? That's they're talking about this colonialism. Okay, eroded most of the tradition that made India great, but after 4 decades of the most creative mobilization for freedom in history, in 90% to reclaim its patrimony and all. मतलब ये बता रहे हैं कि because when British came to power, a lot of traditions we lost, but since 1947 we are trying to regain it. Then he is quoting Bhimrao Ambedkar and all. That he talked about unity and diversity, है ना? So unity and diversity की बात कहा ना? Unity and diversity, that is what he is talking about. This statement about Bhimrao Ambedkar, है ना? Because India is a diverse country, a lot of diversity in terms of religion, race, caste, culture, many different religion, or you can say practices, different types of practices are there. So different types of languages are there and all. So that is what he's talking about, unity and diversity, etc. अभी देखो इसमें और भी बहुत डिटेल है, अब इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाना है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इन डिटेल, बट यस दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू. अब देखो एक साइड में आर्टिकल है, द प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ. पेज ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब लाइक पता ना क्या लोग कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ. सो इट मींस इफ यू हैव डन हार्ड वर्क you got the result, and the pays off matlab we got a better result. So here is saying India escaped the fury of cyclone because of early warnings from IMD. I hope you are aware of cyclone BYJU'S, shayad aapko pata hoga. So it started from, this is Arabian Sea, so somewhere here it started and it's moved like this aur aise kuch gaya hai na. This is the path of cyclone BYJU'S. Okay, now there is a request, there is a question. BYJU'S, I think ऐसे लिखा है ना. Please tell me that cyclone BYJU'S has been named by which country? कौन से कंट्री ने साइक्लोन BYJU'S एक्चुअली नाम दिया है? मैंने बताया पहले few days back, 2 or 3 days back. Please tell me. Now, so that is saying कि चूंकि हम लोग को since we got the early warning मतलब IMD, Indian Meteorological Department, Indian Meteorological Department predicted correctly that we are having the cyclone BYJU'S coming from here and all. तो अगर आप पहले से prepared रहते हो, if you are prepared कि अच्छा यहाँ पे cyclone आएगा, तो लोग उसी हिसाब से response करते हैं, right? So the people will leave the coastal areas, they will make planning and all. तो हाँ, yes, many people are writing cyclone BYJU'S has been named by Bangladesh. Very good, good. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. So अगर कोई चीज unprepared आता है तो आदमी जो है पैनिक में होता है, बट अगर prepared होता है तो भी comparatively less impact होता है ना. So that is what it hit the Gujarat and Rajasthan. यहाँ पे बता भी रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान को hit किया. So that is what is being talked about. IMD began issuing its first report on cyclone trajectory as early as 8th June. Even 8 जून को ही बता दिया था कि there will be some sort of this path, है ना? So some sort of actually cyclone coming in this direction and all, है ना? And they have categorized it as very severe category having more than 115 km/h speed. देखो ये रूट है ना, इस तरह से आया, गुजरात में एंटर किया, फिर यहाँ से राजस्थान चला गया, कुछ थोड़ा बहुत इनफैक्ट एमपी मध्य प्रदेश वगैरह में इंपैक्ट हुआ है. सो दिस इज द पाथ. ओके, यस. हाँ, यहाँ पर जो है कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ राजस्थान है एंड ऑल. कच्छ रीजन इसको कहते हैं, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, है ना. ओके, यस. देखो इसमें बहुत सारी ये होता है, क्या कहते हैं, कैटेगरीज ऑफ साइक्लोन. सो हियर इज वेरी सीवियर साइक्लोन व्हिच इज एक्चुअली फ्रॉम 118 to 167 km/h. ये स्पीड है. अगर इतना के बीच का स्पीड है, if it is from 118 to 167 km/h, it will be categorized as very severe cyclonic storm. इसमें लिखा हुआ भी कि more than 115 km/h स्पीड है, so that is why it is being categorized as very severe category. Okay, मतलब category is given according to the speed. ठीक है, so that is what you should be knowing it. So the power outage, मतलब बिजली चली गई. So the electricity was gone in 1092 villages. 5120 electricity poles were knocked down. So 5000 से ज्यादा पोल्स को तोड़ दिया, मतलब ऑफ कोर्स इतना तेज हवा आई कि तो 186 ट्रांसफार्मर गॉट डिस्ट्रॉयड. 2502 फीडर्स वर डैमेज्ड इन सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन. देखो मैंने बताया कई बार, ये वाला को कच्छ कहते हैं. दिस रीजन इज कच्छ ऑफ गुजरात एंड दिस इज सौराष्ट्र. ओके, यस, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, हाँ. सो मतलब इसी की बात करें, एक्सपीरियंस फ्रॉम रीसेंट पास्ट शोज दैट साइक्लोन्स वेदर इन बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी आर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन प्रिसाइजली इतना. हाँ, मतलब 36 से 60 आवर्स तक इम्पैक्ट हो सकता है एंड ऑल दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो उसी सब की बात हो रही है.
That is what you should be knowing it. India has moved beyond that. However, there are few newer threats on horizon. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं जाना. हाँ, IMD is under Ministry of Earth Sciences. And who is the new Minister of Ministry of Earth Sciences? Mr. Kiran Rijiju. So you should be knowing it. I'm in Kutch right now. Oh. Rashmikant, are you fine? Means सब कुछ खैरियत है वहाँ. Bhuj is famous for earthquake. Yes. Okay. Now here is responsibility and the complexities of climate leadership. ये जानते हैं, देखो, this is an important article. Why? This is written by the Prime Minister of Bangladesh, the current Prime Minister of Bangladesh, and ex-president of Maldives. आप देख रहे हो, इन दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने लिखा है. ऑल गुड. ओके रश्मिकांत, वी होप दैट थिंग्स वुड बी फाइन इन द गुजरात एंड राजस्थान रीजन. ओके, अब देखो, ये इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो गया. एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की और फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के. ठीक है, तो बोथ आर आवर नेबर्स. सो हियर इज इंडिया, दिस इज बांग्लादेश. यहाँ पे आपको मालदीव्स मिलेगा. सो वी हैव, यू कैन से इन जनरल गुड रिलेशन विद मालदीव्स एज वेल एज बांग्लादेश, आप कह सकते हो. ठीक है, अच्छा ही रिलेशन है दोनों के साथ. So over the last few weeks there have been an increasing vocal campaign to unseat president designate COP28 and all. अच्छा, पहले आप एक क्वेश्चन बताओ, then I will explain it. Where is COP28 going to happen? Your options are Brazil, UAE, Egypt, Qatar. देखो, COP28 stands for Conference of Parties. Conference of Parties 28. Okay. It is done under UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. So this is actually climate meeting which happens every year, है ना? Generally November, December के आसपास होता है. So you have to tell me where it is going to happen. Yes, UAE you can say. हाँ, Gauri, Namrafta, Priya Chavan, जिन्होंने भी UAE आंसर किया. B is the right answer. 2 is the right answer to this question. देखो पहले दिखा देता हूँ कहाँ पे. So where is India? This is Saudi Arab, Yemen, Oman. यहाँ पे कंट्री है UAE, United Arab Emirates, है ना. इसकी कैपिटल क्या है? What is the capital of UAE? Abu Dhabi. You must have heard about it. So UAE is very famous. In fact, very famous destination for Indians. Tourist वगैरह भी जाते हैं, जॉब करने के लिए लोग जाते हैं. I think you must have heard about these names. Like यही एक जगह है called as Dubai. Many people are aware of Dubai. Yes. Similarly, there is a city called as Sharjah. ये सब काफी famous city है in UAE. So a lot of Indians go there for business purpose, for job purpose and all, right? हाँ. So देखो क्या है, article क्या है? So they are actually writing, the authors are writing that COP28 president designate is Sultan Al Jaber, and he is actually from UAE. So he is the COP28 president, most likely. President designate मतलब यही होंगे, okay? And he is the CEO of ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company है. This is an oil company of UAE. I mean, Abu Dhabi is the capital of UAE, as I've told you. So he is also the CEO, I think, of this company. Now, so some people have attempted, like US and European Union, they want that this person should be removed as the president of COP28. ये request आई है कि इनको 28 मतलब 28th वाला हुआ, मानू पूनिया. देखो एक्चुअली COP1 हुआ था 1995 में, तो हर साल ऑलमोस्ट होता है. सो दिस इज द 20th एडिशन, तो 20th उसका मीटिंग बताता है. यस. सो एक्चुअली सुल्तान अल जाबर विल बी द COP28 president, but the US European Parliament have actually requested for removal of him because he is the CEO of Abu Dhabi National Oil Company. चूंकि वे इसके CEO हैं, इसीलिए कहा गया है, लोग रिक्वेस्ट करें कि इनको हटाया जाए. So they have requested that he should be removed as the COP28 president. Okay, yes. ठीक है. COP28 मैंने बताया ना, देखो COP28 every year the meeting happened. Environment meeting होती है. So the first environment meeting happened in 1995. That's called as COP1. ठीक है. So इसी तरह हर साल होती है. Last year COP27 happened in 2022 in Egypt, है ना, Sharm el Sheikh. So this year it will be happening COP28. Every year environment meeting happened to protect the environment. आप इस तरह शॉर्ट में समझ लो. COP stands for Conference of Parties. I have taught this in detail in the paid classes and all. ठीक है. अब इसमें क्या करें? They are actually the Prime Minister of
Prime Minister of Bangladesh and the ex-president of Maldives, they are defending him. इनको defend कर रहे हैं कि नहीं, he should not be removed. Okay, let's see why. So they are saying कि means they are talking about that Sultan Al Jaber has has led Masdar, the renewable energy company, which has made huge investment in solar and wind. So they are defending it by saying that Mr. Sultan Al Jaber actually has led this Masdar also, which is a renewable energy company. And this is actually instrumental in solar and wind energy projects. So solar and wind energy is considered as renewable energy. You know? So they are defending it by saying, you know, he has also researched, actually led this company Masdar, which is actually solar and wind. And there is UAE का एक बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये न्यूज में आजकल काफी, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट. So this was also recently opened, which will generate 6 gigawatt of the clean energy, है ना. So nuclear power, nuclear energy generally clean energy में आता है, ठीक है. Okay, these are also considered as, because these are not fossil fuels, ठीक है. तो मतलब ये ना कि environment meeting होता क्या, we have to reduce use of fossil fuel, यही है ना. Like coal, petroleum, that has to be reduced. उसको reduce करना है, ये एक main काम है. So they are saying that they have, this person, Mr. Sultan Al Jaber, has worked on this also. That is what their argument is. Okay, luckily we do not see coal, oil and gas and all. So means the author are saying that for example, they are not talking about increasing the coal, oil and gas. Rather they are talking about now renewable energy should be there. तो इसी सब की बात हो रही है. They are talking about sovereign wealth fund, multilateral development banks, ठीक है. So that is what is being talked about. So basically they are defending it कि उनको नहीं हटाया जाना चाहिए, and these are the reasons they are giving, ठीक है. So अब एक चीज और बताना चाहिए. देखो last year COP27 happened last year in Sharm el Sheikh, which is a place in Egypt. So here the concept of loss and damage was talked about. एक fund है loss and damage fund, इसको कहते हैं, this one. So this was talked about. मतलब जो loss or damage हो रहा है because of adverse effect of climate change. So there should be a fund that has to be set up so that those who are getting affected by adverse impact of climate change, they should be getting those funds to recover from that. ठीक है, ठीक है. तो इसको यही बताया जा रहा है, establishment of loss and damage fund. इसको पढ़ लेने का आर्टिकल है UNEP के वेबसाइट पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पर, about loss and damage fund. So that is what in fact the idea was there in COP27 last year, ठीक है. तो जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, they are actually least contributor to climate change, इसलिए कि वहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है ना. So Western nations have developed more, so they are more responsible for climate change and all. But they are most vulnerable, and the most impact actually of climate change is on the African continent and all. So they should be given some fund to fight those climate change, है ना. तो इसी सब की बात हुई है कि इतना अमाउंट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, इसमें इस आर्टिकल में डिस्कस है. तो एक बार पढ़ लेना है आल्सो, ठीक है. हाँ, डेट इज अ बैरियर. अब इसमें इसी पे जाना और अपना देख लेना था डिटेल. अब इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो. बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. COP28, देखो आई एम गिविंग सम एग्जांपल. होमवर्क आई हैव टॉट इन, जनरली वी टीच इन पेड क्लासेस, बट दिस इज होमवर्क. एक पढ़ के जाना. अर्थ समिट कब हुआ, क्यों हुआ. Second, UNFCCC. Third, you should read is Kyoto Protocol. Fourth, you should protocol. Fourth, you should read is Paris Climate Agreement. ये सब आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है. Because these are very important. It comes in the news again and again, ठीक है. So उससे आपको पता चल जाएगा UNFCCC के अंदर में COP ऑर्गेनाइज होता है. So these are the 4-5 facts you should read. ठीक है. There are no winners or losers in a global breakdown and all. तो अब इसमें अपना डिटेल नहीं जाना. They are defending it that yes, Sultan Al Jaber should be allowed to host the president of COP28 and all. ठीक है. Yes, परम खोज वेरी गुड. 92 में हुआ, 95, 97, 2015. हाँ, ईयर सिर्फ नहीं याद रखना, ये क्या है कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है. So go and read it. हाँ, okay. तो just have an idea about it. They have discussed it. और एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है. This also you should read it. ठीक है. Okay. Now एक साइड में आर्टिकल थी Massacre of Innocence. Innocent मतलब जो बेगुनाह है ना. So those who have not done anything. Massacre means mass killing.
सो युगांडा एंड कॉन्गो मस्ट डू मोर अगेंस्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स। देखो मैं पहले दिखाता हूँ कहां पर है। सो दिस इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, अब देखो यहां पर एक कंट्री है, इसको हम लोग कहते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इसको डायरेक्टली कॉन्गो भी लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर युगांडा, सो ऑन द बॉर्डर ऑफ युगांडा एंड ये वाला युगांडा हो गया, इट्स कैपिटल इज कंपाला, ठीक है। सो युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे यहाँ पे कहीं पे समवेयर हियर द मास किलिंग्स हैव हैपेंड। I mean, 41 people, including 38 students, were killed and all in Uganda-Congo border by suspected Islamic militant allied democratic forces. So, Ugandan authorities have blamed that ADF is responsible for these killings and all. So that is what there's an article that yes, the government should, the Uganda and Congo government must do against, do more against Islamic militants to crush this militancy and all. That is what the author has talked about. Okay. सो इसी की वो बात कर रहे हैं। मैंने दिखा दिया, यहाँ पर है, यहाँ पे बॉर्डर युगांडा और कॉन्गो का। ओके, यस, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग, दिस द नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पर अटैक हुआ। द अटैक हैपन लुहीबीरा सेकेंडरी स्कूल। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। ओके, अब हम लोग चलते हैं ओपिनियन पेज में, पेज नंबर 9। तो यहाँ पे इमर्जिंग चैलेंजेस टू द द्रविडियन मॉडल, इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है। So basically he is actually talking about a bill that was introduced in the Tamil Nadu Legislative Assembly but later on withdrawn because of protest. What was the bill? कि minimum working hours is 8 hours. Now there was a proposal to increase it to 12 hours. Minimum working hours. होता है ना, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सॉरी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, आई एम वेरी सॉरी, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। तो आप 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं करा सकते हो। So now there was a proposal to increase it to 12 hours. The lot of protest happened, and because of which they have to withdraw it. Okay, so that is what is being talked about. तो इसी के बारे में अब इतना डिटेल जाना है तो जा सकते हो, otherwise I mean he's talking about that Tamil Nadu is one of the few states which have brought poverty reduction and all, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। I mean I'm not going in detail because उतना important नहीं है। फिर बीपरजॉय पार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन्स। देखो अब इंडिया के साइक्लोन में कुछ चेंजेस आए हैं, दैट इज व्हाट दिस ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। देखो द लास्ट 10 ईयर ऑफ रोलिंग ऑफ एवरेज साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस। तो अब देखोगे 1990s के बाद यहां से, मतलब आई थिंक ये शायद समवेयर अराउंड 2000 के आसपास की बात है, वी आर विटनेसिंग द राइज ऑफ साइक्लोन्स, है ना, थोड़ा सा बढ़ा है साइक्लोन्स के नंबर। यहाँ पर 1980s वगैरह बहुत आते थे, 1950s में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते थे, बट इट वॉज एक्चुअली ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, है ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 2000 के आसपास की बात। बट इफ यू सी इट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड। एक चीज ये देखने को मिला। दूसरा चीज आप देखोगे, जनरली इन बे ऑफ बंगाल वी हैव मोर साइक्लोन्स एज कंपेयर टू अरेबियन सी। आप देख रहे हो, देखो लेट मी टेल यू, यहाँ पर मोर साइक्लोन्स आते हैं। इसका रीजन है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, यू विल फाइंड मोर साइक्लोन्स हियर, लेस साइक्लोन्स हियर इन अरेबियन सी, ठीक है। But if you see it carefully, the number of cyclones in Bay of Bengal is decreasing, and the number of cyclones in Arabian Sea is slightly on the increasing side. आप देख रहे हो, और से देखो, हालांकि अरेबियन सी में कम आते हैं साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं, तो भी इसके नंबर्स थोड़ा सा कम हो रहे हैं, इसके ज्यादा हो रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे, हाँ, तो साइक्लोन बी पर जो है यहीं पर आया, साइक्लोन बी पर जो है, हाँ, नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट इज 2070 फॉर इंडिया। यस धनंजय, हाँ, ओके। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी पीस प्राइज 2021 वुड बी अवार्डेड टू शेख हसीना, गीता प्रेस, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बताइए। सो इट वुड बी अवार्डेड टू मिस शेख हसीना, गीता प्रेस, मिस्टर पीएम मोदी, मिस्टर एस जयशंकर। इनको दिया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, because they have asked, पूरा entire passage CLAT 2021 में गांधी पीस प्राइज पर था, so that is why गांधी पीस प्राइज becomes very very important. Yes, गौरी, परम, खोज, प्रिया, चवन, धनंजय, रश्मिकांत, रंजना, you all are right. गीता प्रेस is the right answer. Guys, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। We are seeing only 11 likes, at least 30 plus likes ले जाओ, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। Everyone, yes. Now, I hope you are aware, Geeta Press from Gorakhpur awarded Gandhi Peace Prize for 2021. This is very, very, very important. इसलिए कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया था 2021 क्लैट में। I am showing you, ठीक है।
So this is actually देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे. This is UP. On the east of UP, there's a place called as Gorakhpur. So here you will find a press called as Gita Press. Okay, so this is actually publishes Bhagavad Gita, Ramayana, Upanishad and all. Press समझते हो ना जहाँ पे किताबें छपती हैं, अखबार वगैरह है ना. So that is what you should be talking about है ना. So now there are some questions for you. ठीक है, मैं कुछ questions दे रहा हूँ on the pattern of again Gandhi Peace Prize पर ही question है. So please tell me, Gandhi Peace Prize is awarded for what? And this is a CLAT 2021 question. बताइए क्यों? गांधी पीस प्राइज 2020 उस टाइम पे दिया गया था है ना, और ये वाला जो गांधी पीस प्राइज 2021 है. ठीक है, बी केयरफुल हियर. सो दिस इज CLAT 2021 क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे. दिस इज, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर. यस, देखो कुछ चीज ने कॉमन सेंस से भी आंसर होती है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गांधी जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस शुड बी देयर. ठीक है, मैच कर रहे कि नहीं है ना. गांधी जी टॉक्ड अबाउट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है ना, सत्य और अहिंसा की बात की. तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. यस, गौरी, धनंजय, प्रिया, चवन, परम खोज, रश्मिकांत, जोया, यू ऑल राइट. डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस. ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है. जब गांधी जी की बात हो रही है तो नॉन वायलेंस से रिलेशन होगा. डी इज द राइट आंसर. Similarly, Gandhi Peace Prize was awarded for the first time in 1995 to whom? सबसे पहली बार गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया था 1995 में? बताइए. These are CLAT questions. बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एवरीवन एटलीस्ट 30+ लाइक्स ले जाओ. We are working very hard to come up with these quality contents, है ना. Yes, what is the right answer? The right answer is option A. Guys, आपको एक चीज समझना होगा. These are previous year question. तो previous year question गलत नहीं होना चाहिए. Okay, तो वो याद होना चाहिए आपको कि how they are asking this question. So previous year question is must. You must be knowing it. A is the right answer to this question. Yes, Jyoti Kumari, Priya, Chavan, Rashmikant, Zoya Khan, Gauri, Gopal, you are the right. The next is which of the following Indian organization was awarded Gandhi Peace Prize in 2014? ये भी सवाल पूछा था. CLAT 2021 में सवाल पूछा था कि 2014 में गांधी पीस प्राइज किसको मिला था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को. So it means they're expecting you to go back in detail and search it and find out the answers. बताइए किसको मिला था. You should be knowing it, guys. This is a previous year question of CLAT. Yes, इसरो को मिला था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. गौरी, प्रिया, चवन, यू ऑल राइट. सी इज द राइट आंसर. नितिका सिंह, ज्योतिका कुमारी, गौरी, यू ऑल राइट. अब देखो जो गांधी पीस प्राइज 2020 है, दिस वाज गिवन टू शेख मुजीबुर रहमान. ठीक है, लास्ट वाला. सो प्लीज टेल मी ही वाज द फर्स्ट व्हाट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर. ठीक है, एंड हिज डॉटर इज एक्चुअली शेख हसीना, who is the prime minister of Bangladesh, जिनकी अभी आज मैंने आर्टिकल डिस्कस किया. she is the prime minister of Bangladesh and she is actually the daughter of Sheikh Mujibur Rahman. What is the right answer? He was the first president. ठीक है, yes, he was the first president of Bangladesh. Yes, Gauri, Nitika, Gopal, Goyal, you all are right. हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में. वेरी गुड. हाँ, so that you should be knowing it. Then एक और क्वेश्चन पूछा था, जो ये गांधी पीस प्राइज 2020 के विनर थे. शेख मुजीबुर रहमान was assassinated on which date? अब इसका मतलब कभी गीता प्रेस न्यूज में. ठीक है, सो नाउ दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम गीता प्रेस. थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेना. इट इज फ्रॉम गोरखपुर. ठीक है, तो इसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेना. व्हेन इट वाज फाउंडेड है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एंड ऑल, उसको पढ़ना. The right answer is actually C. August 15, 1975 is the right answer to this question. Yes, so here the right answer is C. Yes, Priya, Chavan, Gopal, Goyal, Nitika, Gauri, Rashmikant, you are right. C is the right answer to this question. ठीक है, सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Everyone please press the like button. Subscribe to our channel. Yes, okay. ठीक है, फिर एक और है इन मन की बात. पीएम मोदी स्पीक्स ऑन इमरजेंसी एफर्ट्स टू इरेडिकेट टीबी. अच्छा, टीबी इरेडिकेशन का टारगेट क्या है इंडिया का? इंडियाज टारगेट ऑफ टीबी इरेडिकेशन इज 2025 है ना, एंड WHO का जो टारगेट है वो है 2030. So India's target, this is India's target.
ठीक है, टीबी एलिमिनेशन। अच्छा कुछ चीजें पढ़िएगा। सो टीबी इज एक्चुअली caused by which disease, I mean कौन सा pathogen से होता है, go and find out, and what is the name of the vaccine of TB, ठीक है, या find out करना, ठीक है, ओके। फिर एक आर्टिकल थी, ब्लिंकन arrives in Beijing as US and China looks to mend fractured ties. Blinken is actually Anthony Blinken is actually US Secretary of State. US Secretary of State. So US Secretary of State is like Foreign Minister of USA, like that. But they do not use the word Foreign Minister, rather they use the word Secretary of State. ठीक है. So he arrived in Beijing. Beijing मतलब चाइना में आए थे. Okay. And both are looking to mend fractured ties. Fractured ties मतलब रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो उसको सुधारने के लिए, है ना. So mend मतलब to improve the ties or relationship which are actually not very good, है ना. तो इसी को mend fractured ties कहा गया, ठीक है. So is there, हाँ, mycobacterium tuberculosis से टीबी होता है, very good. And BCG vaccine is there for TB, very good, yes. Dhananjay Gauri, you are right. Okay, so this is all about today's class, guys. Now I'll be meeting you at 6 p.m. ठीक है. So download the app, go to CLAT section. 6 p.m. पे आज मुलाकात होगी. We'll be having a quiz of the Hindu newspaper. The Hindu newspaper revision, है ना. So whatever the questions I am giving you, so I am revising those questions from March, April, May. वो पीछे से हम revise कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे. So on our app, download the app, go to CLAT section at 6 p.m. I'll be meeting you. ठीक है, आना जरूर. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.